We are welcoming you for our new episode of College Review. Today we are with Alok sir and Mohit Kelkar sir. Sir, Alok sir is Executive Director of Outreach and Admission in Atlas Skill Tech University, and Mohit sir is Director of Outreach and Admission at Atlas Skill Tech University. Sir, welcome you. Thank you so much, Sanjay ji. We are happy to be at Delhi at your office, and you have been our esteemed partner for many years, and you have been referring great kids to Atlas. They are doing very well, and we are so happy about this relationship. Yes, sir. This video is for those students, those who are looking for admission in Atlas Skill Tech University, or those who are going to give their exam, CAT, ZET, MET, like these exams. Sir, पहला question, why Atlas University? There are so many reasons why one should choose Atlas Skill Tech University at Mumbai. You have been to Atlas's campus last year. You came, year before you came, and we have a great campus, one of the finest in India, and let me tell you, one of the finest in world. We are located at BKC, which is in heart of Bombay, and so great infra and great facilities for students. Let me tell you where we excel. The focus point at Atlas for PG program is grooming of the students to the maximum. The first point I would like to emphasize upon, the grooming of students. This is a professional program, and after this, students will go out in the market looking for a job. So we make them job ready. Their grooming, you have seen our students. When you have been to our campus, you have seen our students. Let me tell you, the way our students walk, talk, present themselves, you can tell them they are from a different institution or they are from Atlas Skill Tech University. So grooming is the first criteria, first and foremost point I would like to emphasize upon. How is the crowd there? Means most of the crowd is experienced crowd or okay, very interesting question. I'll answer your question a little later. Let me highlight some of the other points where Atlas really excels. Our corporate connect. Our corporate connect is huge. Every week, we get stalwarts from industry who come and conduct master classes for our students. So our students get exposure to the head of marketing at Hindustan Lever or Nestle or Mondelez, or ICICI Bank. So our advisory board is led by Mr. Deepak Parekh, who is chairman of SDFC Group, and there are so many people from Bain India and ICICI Bank, KPMG, Hindustan Lever. A lot of luminaries are there from the corporate world, at our advisory board, and they help us revise or tweak our curriculum from time to time. What is needed in industry we teach. Okay. Those are who's who of the industry actually, and these people would know the best what the industry is requiring right now, and that is how the curriculum is being developed at Atlas. Sir, as far as I know, Atlas Skill Tech University means Atlas is a private university. Correct. So we do have a number of multiple courses running in Atlas University. But as far as this interview is concerned, this interview is for the MBA students, those who want to pursue MBA in Atlas University. अब क्योंकि बहुत सारे courses, n number of courses Atlas run कराता है, तो क्या उसका impact MBA पे भी पड़ सकता है? Because there are many colleges in Mumbai, Bangalore, Pune, Delhi, those who are only given PGDM program. One point, sir, जब भी बता रहे थे, he was telling that what are the advantages. Yes. One of the key advantages for Atlas is multidisciplinary education. Okay. Right. Atlas University has ISD, which is a design school, ISME, which is a management school, under which our MBA program is there, and UGDX, which is a technology school. Okay. So the best part is, impact positive पड़ता है दूसरे programs का, क्योंकि मेरा जो MBA का स्टूडेंट है, ये सर काफी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि that the private university has n number of multiple courses. So PGDM का जो बच्चा जैसे आपने बोला वो वही करने वाला है थ्रू 2 साल. बट इधर कैसे है, इसको डिजाइन का भी थोड़ा सा कुछ मिलेगा, इसको टेक्नोलॉजी का मिलेगा, बच्चे को उसका वो होराइजन जो हम बोलते हैं वो बहुत बढ़ेगा, और उसको आगे जाके फ्यूचर में ये पता चलेगा अरे यार डिजाइन का ये एंगल मुझे काम आ सकता है. इसमें हम लोग काफी हार्ड हमारे पास 40 प्लस इलेक्टिव्स हैं. 40 प्लस इलेक्टिव्स है. जो बच्चा MBA कर रहा है
स्टूडेंट मार्केटिंग कर रहा है, उसको फिनटेक के बारे में भी इलेक्टिव वो ले सकता है, डिजाइन थिंकिंग का इलेक्टिव ले सकता है। इनटेक कितना है सर हमारे पास? सीट intake. It's a multi. I'll come to that, sir. It's a multidisciplinary approach. Seat हमारे पास 420 है. That is 420 last year was the intake. This year also the intake is going to be the same. We are not going to increase. Okay. Let me tell you a very interesting aspect of our MBA cohort. You know, these 420 students we have recruited from more than 93 cities of India. And more than 193 colleges of India. Okay. So you see, this is a very, very diverse cohort. ऐसे cohort में क्या होता है? You learn not only from teachers, but you also learn from each other. सर, आपने टीचर्स की बात करी। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि फैकल्टी किस तरह की है, किस तरह का वर्क, क्या वर्क एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी है, या वो फैकल्टी है जो आज भी किसी न किसी कॉर्पोरेट के साथ जुड़ी हुई है? सर, ये 3 टाइप के फैकल्टी हमारे पास है। टिपिकल हमारे 3 टाइप के फैकल्टी आप कर सकते हो। एक इज द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जो पीएचडी फाइनेंस में है, मार्केटिंग में, वो तो है ही, मतलब दीज आर एक्सपर्ट्स, सो दोज आर नीडेड। सेकंड इज वी कॉल देम प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जिन्होंने 25-30 साल कॉर्पोरेट में ये ऑलरेडी किया हुआ है जॉब, एंड नाउ दे नो कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली दे ग्रूम दिस। Third type, which is very interesting, which you will rarely find at any other places, is the entrepreneurs. Okay. So they are doing something, they're still doing something on their own, and they have done a lot of things. Okay. So they know what is required for the entrepreneur to be successful, Okay. or even how can an entrepreneur fail. So that is the actual learning our students get. And what about the international exposure? Because most of the colleges or universities giving international exposure. We have every year our students, MBA students, or undergraduate students also go for global immersion for two weeks. Last year they went to UK. And they also went to US. They went to some of our UG students. They went to Paris. So every year, ये 2 week का हमारा global immersion होता है, जहाँ students हमारे बाहर जाते हैं और इन सारे universities में जाके classes, sessions, master class attend. So do they have to pay? Yes, ये extra होता है. इसका cost अलग होता है. एंड एक और भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है जिसको हम लोग हर एक जनवरी में ये होता है हमारा इंटरनेशनल फैकल्टी वीक। इस इंटरनेशनल फैकल्टी वीक में एक वीक या 10 डेज का ये प्रोग्राम होता है जहाँ पे फैकल्टी फ्रॉम यूके, यूएस and different countries they come and teach our students, our MBA students, you know. तो आप देखो हमारे बच्चों को इट्स नॉट नेसेसरी कि उनको बाहर ही जाना है, एक्सपोजर लेना है। फैकल्टी खुद आ रही है उनको पढ़ाने के लिए, which no other institution does in India. सर कुछ बच्चों का ना क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या एटलस यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी दे रहा है कुछ, और अगर वो दे रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या है मार्केट में, या किस तरह से जॉब के लिए? ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये मैं काफी सुनता हूँ, अलग जगह पे काफी लोग सर्टिफिकेशन का पिचिंग करते हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट कि लोगों को शायद उसका जरूरत पड़ता है। एटलस कोर फोकस इज ऑन द MBA प्रोग्राम। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई बिलीव इन आवर करिकुलम, आवर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स आर इन चार्ज। द प्रोग्राम इज डेवलप्ड सच कि उसके साथ बच्चे को और रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, बट all these certifications anyways time to time are included, faculties coordinate and they get it done, but we do not even use this as a pitching point because we are very confident of our curriculum. पर क्या इस तरह के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का लास्ट प्लेसमेंट में कोई असर देखने को मिलता है? क्यों मेरे करिकुलम का ही उस पे इम्पैक्ट आएगा, बट अगर फैकल्टी को लगता है फॉर ये बैच के लिए ये काम का आएगा तो दे इमीडिएटली गेट दैट डन। देयर आर सर्टिफिकेशंस बट वी डू नॉट हाईलाइट दोस बिकॉज़ वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर ओन curriculum. That is the point. इस साल का फीस क्या हम रखने जा रहे हैं? इस साल चेंजेस है लास्ट ईयर से? लास्ट 6 ईयर से 5 साल 6 साल से फीस सेम, 6 साल से 10 lakh for 2 years and 45,000 admission fee. This year we have increased only 10%, so it's 11 lakhs for 2 years and 45,000 your जो मुंबई के हिसाब से एक डिसेंट फीस है। It's a very decent, you know, very decent, and बच्चे हमारे they are very happy. I think आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, you should talk to them, and if you talk to them you will get some great reviews of Atlas. सर अब इसमें ना एक चीज देखने को मिलती है, आपके फीस काफी नॉमिनल है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, वी ऑल नो, स्टूडेंट को भी पता रहता है, बट द हॉस्टल एक इशू रहता है। क्या हॉस्टल हमारे पास इन हाउस है, कैंपस के अंदर है या फिर बाहर है, और अगर बाहर है तो उसका कॉस्टिंग क्या है, और अंदर है तो क्या उसका कॉस्टिंग क्या है? ये बॉम्बे में रहने के लिए स्पेशली जहां हमारा कॉलेज है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। वी हैव
In-house, we have our own hostel. Okay. You know, where cost goes around 5 to 6 lakhs rupees in a year. But this is a world-class hostel. Okay. Everything is included: your food, your laundry, your gym, and you must visit. And you actually आपको देखना है. You know, it's a really world-class hostel. And जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अब बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स अगर जो बच्चे अफोर्ड नहीं जो कर सकते नहीं उनके लिए है, क्या है? वो अगर अफोर्डेबिलिटी की बात आती है, अगर आप डीपली देखोगे, इट्स अ वेरी वेरी अफोर्डेबल बॉम्बे के हिसाब से. अगर किसी को उतना पैसा नहीं दे के बाहर देखना है, बाहर देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. नॉमिनल कॉस्ट क्या हो जाता है बाहर पीछे? बाहर एक 20 से 25 हजार के बीच में. ओके सर, आप पकड़ लो, उसमें भी उसका जा सकता है. बट व्हाटएवर, आई मीन हर बच्चे का रिक्वायरमेंट और लाइफस्टाइल अलग होता है. ओके ओके. तो कुछ है जो बिठा देते हैं 3 लाख, ओके. अदरवाइज 4 सवा 4 तक जाता है. उसके अगेंस्ट हमारा 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा पड़ के आपको कैंपस से क्रॉस करके जाना है. हॉस्टल है, एवरीथिंग, आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर. तो अगर हम मोटा मोटा समझने की कोशिश करें तो बच्चे को फीस प्लस हॉस्टल, क्या वो माइंड मेकअप करके चले कि इतना मुझे लेके चलना होगा? 15 से 16 लाख का एक फिगर थोड़ा सा आगे पीछे पकड़ सकता है. उसमें हो जाएगा बच्चे का. आप बॉम्बे के हिसाब से बहुत ही अच्छा है. इवन आपके दिल्ली के हिसाब, दिल्ली में भी आपको इससे कम, बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, इससे कम नहीं मिलेगा. See, it's a question of what exactly the parents are looking for, what exactly the kid is looking for. There are so many parents, उनका कहना है हॉस्टल में ही रहना है. सर, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो बच्चे काफी ज्यादा पूछेंगे, व्हाट इज योर हाईएस्ट सैलरी? Atlas we are there since last 10 years. But we became university in 2021, yes, which is only 3 years have passed by. Now you see, and so you are in this education consultancy business, and you see in a span of 3 years we are recruiting 420 students from different parts of country, you know, and we are very very happy to tell you some of the brilliant companies are coming and hiring our students. Companies like Philip Capital, companies like, you know, ICICI Bank, Cevex Technologies, McLaren, Marsh McLaren, you know, Kotak Bank, Mudra, you know. So हमारा average package 9 lakhs rupees है, which is very very good, you know, and highest हमारा 13 to 14 lakhs. Okay, 13 lakh is domestic. Is there any international placement also? Not as of now. अगर लोएस्ट की बात करें कि इस पॉइंट से नीचे हम कंपनी को नहीं जाने देंगे, यानी कि वो लास्ट पैकेज क्या होगा जिसके नीचे आप कंपनी को एंटरटेन नहीं करेंगे? Close to 7 lakhs rupees, 6 to 7 lakhs rupees. उससे नीचे कंपनी वहाँ पे एंटरटेन नहीं करेंगे. सर, बहुत सारे बच्चों का मानना है कि मार्केटिंग की कंपनी ज्यादा कॉलेजेस में देखने को मिलती हैं. Answer your question. Sales is a good field, you know. Marketing is a great field. And so is your digital marketing, advertising. हमारे यहाँ 5 स्पेशलाइजेशन है: मार्केटिंग, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, business analytics, digital marketing, advertising, and let me tell you, the participation is equal. Okay. Finance की some great companies, Nomura, Bank of Nomura, या वो so फाइनेंस की भी कंपनी आती है, मार्केटिंग में मार्केटिंग की कंपनी आती है, रिसर्च की कंपनी आती है, बिजनेस एनालिटिक्स की कंपनी के स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए आती है, डेफिनेटली सेल्स के लिए भी आती है. इट्स नॉट ओनली सेल्स वेयर यू गो एंड जस्ट डू सम काइंड ऑफ सेल्स, नो मार्केटिंग, यू नो, एक्सपोजर एटसेट्रा. सो इट्स एब्सोल्युटली सेम. मैं आपके साथ अपना इस साल का शेयर करूंगा प्लेसमेंट अपडेट, और आप देखें और बच्चों के साथ शेयर करें. मेरा एक बच्चों के लिए, दिस इज माय मैसेज टू MBA aspirants. They should go to our website and see what Atlas Skilltech University is all about. The most importantly, I would encourage them to come to our campus. Okay, most important. See, those who wants to take admission in any of the B school in Mumbai, Pune or Bangalore, you must visit to the campus. This is my request also. If you want the name and number of the pass out students of Atlas University or any other colleges pass out students, you can have my number on screen, 9891898289. You can call me anytime, you can WhatsApp me also. I'll give you the name and number so that you can connect directly the student side and get to know the real picture of ISME or Atlas University, so that you can know each and everything. You know about the faculty, you know about the placements, you know about the infrastructure, and then you can decide whether to take admission in this Atlas University or any other university. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah.